Hello guys, now we'll study the class 7th NCERT, our environment chapter 7, women settlement, transport and communication. So basically here studying the transportation, settlement already we have studied, and the transportation also we have completed two means of transportation. One is the roadways, another is the railways. Now we will study the third means of transportation, that is the waterways. So we have under the roadways we have shown the longest uh, under the railways we have shown the longest railway line. Now we'll study the waterways. You have already learned that since early days waterways were used for transportation. ओके सो ये आपको बहुत पहले से पता होगा कि लाइक जैसे जो वाटरवेज था, जैसे रेलवेज़ और रोडवेज से पहले इसका काम चलता रहता था, मतलब कि बहुत टाइम से पहले लोग पानी के थ्रू आना जाना करते थे. वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्क गुड्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. बोला जाता है जो वाटरवेज होते हैं वो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस होता है वो बहुत सस्ता पड़ता है कोई भी हैवी और बड़े सामान लाने के लिए. नाउ देयर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. ओके सो जो वाटरवेज होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं. वन इज़ द इनलैंड वाटरवेज, अनदर इज़ द सी रूट्स. ओके नाउ सो यहाँ पे जो वाटरवेज एग्जांपल आप देख सकते हो डायग्राम में, जो है इनलैंड वाटरवेज का दिया है. हम आगे ये भी पढ़ेंगे इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स में क्या डिफरेंस होता है. नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज ए इनलैंड. सो बेसिकली देखो इनलैंड मीन्स अंदर, ठीक है, जो लैंड के अंदर आप ऐसे को रिलेट कर सकते हो. तो बेसिकली जो सी रूट्स, जो सी पोर्ट जो हो क्या करते हैं, लेक्स रिवर ये सब से कनेक्ट होते हैं, वो इनलैंड वाटरवेज कहलाते हैं. लेकिन जो रूट्स सी से कनेक्ट होते हैं सी रूट्स कहते हैं. नाउ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटर्स आर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स. ठीक है, कुछ हम अगर वाटर इनलैंड्स की बात करें, ठीक है, इनलैंड वाटरवेज की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र उसमें से एक आता है. द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड रिवर नाइल इन अफ्रीका. तो बोलता जाता है कि जो ग्रेट लेक्स से होता है नॉर्थ अमेरिका में, और रिवर जो नाइल नदी है अफ्रीका में, ये दोनों एग्जाम्पल है किसके, इनलैंड वाटरवेज का. नाउ सी रोड्स एंड ओशनिक रोड्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फॉर वन कंट्री टू अनदर. बोला जाता है जो सी रोड्स होता है जैसे इनलैंड वाटरवेज हो गया, ठीक है, ये जो ओशनिक रोड्स है ये बेसिकली किस लिए यूज़ होते हैं, बेसिकली यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज, मतलब मर्चेंडाइज पर्पज़ के लिए, और एक सामान को एक जगह से दूसरी कंट्री में ले जाने के लिए. दिस रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स. बोला जाता है ये जो रूट्स होते हैं इसको किससे कनेक्ट किया जाता है, पोर्ट से. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया. अगर हम एशिया की रिस्पेक्ट में बात करें तो एशिया में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रूट्स हैं जो हमारे इंडिया में लोकेटेड हैं वो सिंगापुर हो गया, ठीक है, इट्स नॉट इन इंडिया, मुंबई इज़ इन इंडिया. न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका. बोला जाता है ये रियो दे जेनेरियो साउथ अमेरिका, दरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका. बोला जाता है कि ये सारी सैडन इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडाम इन यूरोप. ये सारी चीज़ें कहाँ जो है वो मेजर सी पोर्ट्स हैं. ठीक है, नाउ कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. क्या आप कुछ और पोर्ट्स के नाम बता सकते हैं. तो बेसिकली हाँ, हमारे जैसे कि विशाखापट्टनम भी हमारा पोर्ट है. ठीक है, इंडिया में ऐसे बहुत से पोर्ट्स हैं, आपको जस्ट मैप से देख के फाइंड करना है. तो बेसिकली हमने यहाँ पे वाटरवेज में पढ़ा. वाटरवेज में हमने क्या पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि जो वाटरवेज होता है वो सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है. रीज़न क्योंकि क्या है कि यहाँ पे कॉस्टिंग कम होती है. और जो वाटरवेज होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है. पहला है इनलैंड वाटरवेज, दूसरा सी रूट्स होता है. ठीक है, और इनलैंड वाटरवेज उसे बोलते हैं जो रिवर्स, लेक्स, इन सब चीज़ों को कनेक्ट करता है. सी रूट्स उसे बोलते हैं जो सीज़ को कनेक्ट करता है. ठीक है, आई होप you are getting it. Now we'll move to the fourth kinds of transport, that is the airways. This is the fastest ways of transport developed in the early 20th century. ठीक है, जो मतलब कि 20th सेंचुरी में तक जो ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट हुआ था उसमें से एयरवेज जो है वो सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ता है. इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स. बोला जाता है कि फास्टेस्ट मतलब तेज़ी से चलने वाला. ठीक है, मतलब कि अगर हम ट्रेन की बात करें, रोड की बात करें और वाटरवेज की बात करें तो उसमें एक जगह से दूसरे जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. लेकिन अगर हम एयरवेज की बात करें तो एयरवेज में क्या होता है कि जनरली टाइम टेकिंग कम होता है. बट यहाँ पे टाइम टेकिंग कम होता है लेकिन एक और चीज़ होती है, एक्सपेंसिव हो जाता है. नाउ
एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स। बोला जाता है कि जो एयर ट्रैफिक होती है बेसिकली कई बार क्या होता है कि एयर ट्रैफिक की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे फॉग स्टॉर्म्स अगर ये सब एटमॉस्फेयर में होते हैं तो वहाँ पे एयर ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती है। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज। व्हाट इज सेइंग कि एयरवेज एक ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू से हम एक ऐसे जगह पे भी जा सकते हैं जहाँ पे मान लो कि रोड्स या रेलवेज़ का कोई कनेक्शन नहीं हुआ है। हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इनएसेसिबल एरियाज एंड इन टाइम ऑफ कैलामिटीज़ फॉर रेस्क्यूइंग पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड वाटर क्लोथ्स मेडिसिन। बोला जाता है सी, अगर आपने कभी देखा होगा कि कहीं पे अगर मान लो कोई प्लेस वनरेबल कैटेगरीज में आता है, ठीक है, अर्थक्वेक होते हैं या सुनामी आती है, फ्लड्स आता है कई, तो वहाँ के लोग क्या होते हैं मेजरली अफेक्टेड हो जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि वो एरिया प्रॉपर्ली अफेक्टेड एरिया हो जाता है, तो वहाँ के लोगों के पास खाने की प्रॉब्लम्स होती है और भी चीज़ों की प्रॉब्लम्स होती है। तो व्हाट डज द गवर्नमेंट डू? गवर्नमेंट यूज़ द हेलीकॉप्टर्स okay to rescue the people and distribute the food, water, clothes, medicine. Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt and Cairo. बोला जाता है कि there are the some important airports like Delhi, Mumbai, New York. All these are the important airports. So basically here we study the means of transport, airways. So what are the airways? This here we came to know about two things. It is one is the fastest ways of transport, another is the costliest. Okay, now we have completed the two topic of this chapter. One is the settlement, another is the transportation. So till now we have understand that due to the needs of human being, human has transformed all the things which there is a requirement for them. Now we will move to the communication. See, communication is a process of conveying messages to the others. ठीक है, so basically if you recall the story of Akbar Jodha, okay, so you might be have seen in the pictures or TV, then when the serial was coming Akbar Jodha, so there the parrot was taking the letter and parrot used to send to take that letters to the receiver. Okay, so but that was a earlier time means of communication. Okay, but so basically communication define that conveying the message to others, what are the message you want to tell to others, that is a communication. With the development of technology, humans have devised new and fast modes of communication. So what it's saying कि as the technology groups grow, as the people grow, demands grow, as the everything is grow, okay, fast modes of communication are developed by using the new technology. Okay, see the figure 7.10 explain the evolution of communication system. So this is the communication system evolution. We will just go through this. Yeah, just a minute. Yeah, so if at first what was happening, see you can see this parrot, okay, or the peacock that was going to send the message. Sorry, at first what was there, at first state people were meeting and conveying the message, then later if they are distance they sent to the parrot. Then what happened, then postman came, okay, then newspaper came, okay, then media section, all this computer, laptop, telephone, mobile, everything is came. Now last is a satellite. So all this is the basically evolution of communication. Now the advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. What it's saying, as the advancement increases, okay, as the advancement came, the field of communication has been increased, or with the information revolution. Different modes of communication are used to provide information, to educate as well as the entertain. Okay, so what it's saying ki, like there are use of different modes of education or different modes of communication are used to educate the people, to entertain them. See, by using the different modes of communication you can interact. See, as I am delivering the lecture to you and you people are able to see, this is also one more kind of communication. Okay, one mode of communication through the
online classes. So if I am delivering you the online classes, what I am doing, I am just delivering my knowledge to you and you are taking knowledge. So here is an increasing of education information. And suppose if somebody is making the video, pictures, all these are entertainment. Through newspaper, radio, television, we can communicate with a large number of people. By using the newspaper, radio, television, we can communicate to the large number of people. They are therefore called the mass media. So when there is a communication with to more than one people, that communication is known as mass media. Satellites have made communication even faster. So what it's saying, कि by the use of satellite, the communication has become the very easier as compared to normal. See, basically the function, what is the function of satellite? What does the satellites do? Satellites deliver the communication to more than one people at a single time in a single platform. So basically here we can understand satellites is doing a lots of work or faster. Satellites have helped in oil exploration, survey of forest, underground water, minerals, wealth, weather forecast, disaster warning. What it's saying, with the use of satellites, what are the how satellites are helpful apart from the communication. It also helps in the oil exploration. Okay, if suppose through the with the help of satellite we can determine in this, suppose one mountain is there. Okay, with the use of satellite we can determine what are the minerals is located, or what is the minerals are here under this mountain. Now, underground water, mineral wealth, weather forecast, disaster warning. Now we can send electronic media or emails through internet. Okay, by using the internet we can send the electronic emails. Okay, wireless, by using the mail we can deliver the message to the lots of people at a single platform. Wireless telephonic communication through cellular phones have been very popular today. By using the wireless telephonic communication, wireless means, see, if you are remembering, or you can ask to your parents, there was some kinds of phone, still landline phone, it still is available in nowadays also. So that is a also one a kind of, that is a actually wireful communication, but we are using the mobile, that is a wireless communication or cellular phones. They are very popular, nowadays everybody, even the kids, are able to use the phones and they are able to operate. Internet not only provides us with the worldwide information interaction, but also made our lives more comfortable. Okay, so due to the use of internet, suppose if you are watching my video on the YouTube, that's only because of the internet. So basically due to the use of internet, this internet has not only provide the वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन. इट मीन्स इंटरनेट जो है वो सिर्फ हमें देश दुनिया की खबरें तक नहीं पहुंचाता है. ऑल्सो इट हैज़ मेक अस द प्लेटफॉर्म, और इट हैज़ गिवन अस प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट विद बोथ, बट हैज़ ऑल्सो मेड अवर लाइफ मोर comfortable. Okay, we can see by the using of internet. See, nowadays what is the trending? E-commerce is trending. Okay, online delivery is trending. Means by sitting at your home, just ordering from your phone, by using the net, everything can be reached to your doorstep. No need to go outside, no need to travel, no need to expense vehicle charges, anything. Okay, now we can reserve tickets for railways, airways, even cinemas, hotel, sitting at home. What this kind, what it's saying, कि by you, just like by ordering online ordering, you can also reserve the seats in the railways, cinemas, sitting from your home. Now just a minute. Yeah, see, this is the just worldwide major seaports and airports. You do not need to all this, just you have to go through the seaports which are the major. Okay, and the seaport which passes from the India. Of interconnectivity of people, service, institution across the world, we are large global society. Okay, so by using the internet we generally not only make our life comfortable, okay, entertaining, we also get platform to interact the people, connect the people, get the service, provide the service, form the institution across the world. We are largely global society. So basically we can see, because due to increasing of the this communication, the globalization has increased a lot. So in this way we have completed this chapter, and under this chapter we have studied the three main topic that I will revise you
step by step I will let you know. Just so first topic was settlement. So we saw that how earlier the human were living in the under the cave. Okay, but slowly the human being started building the or constructing the houses. So in that house human started living. So that were known as, or that is known as settlement. Under the settlement we saw the one important thing, like settlement are basically two kinds. One is a composed or congested one, you can say, or second is a scattered one. So basically scattered one is found in the rural area or hilly area. Congested one is found in the city area. So this was a kind of settlement. Under the settlement we saw how there are temporary and permanent settlement. Okay, permanent settlement. So temporary settlement is a settlement which lasted only for the short period of time, whereas permanent settlement are the settlement which lasted more than all for a long period of time. Got it? Now after that what we have after that what we have studied, we have studied the types of transportation. Okay, or transportation. Second topic is transportation. Under the transportation we saw the four means of transportation: road, okay, railway, airways, waterways. We saw that roadways are used most frequently, airways is less time taken, okay, and more costly. Okay, so all this thing. Then after that we study the communication. Communication, okay, communication means delivering your opinion or your message to the other party. Okay, so how this communication has been developed from starting onward. So earlier we saw there was some birds used to take the letters and deliver the message to the messenger. Okay, then basically after that post office open. After that lots of thing came, like a TV came, telephone came, wireless mobile came. Then after that digital era came, now satellite came. So all these things have make our life so accessible and so easy. So I hope you have understand this and enjoyed a lot this chapter. We have completed human settlement, transport and communication. So we will come to the next class with the next